Yes, come to page number 166, page example 7.1. The solved example. Unpolarized light of intensity I0 is made to pass through three polarizers P1, P2, and P3 successively. The polarization axis of P2 makes an angle of θ1 with that of P1, while that of P3 makes an angle of θ2 with that of P2. What will be the intensity coming out of P3? So now, there is unpolarized light which is passing through अभी तो शुरू three films over here. Okay, which is passing through three films over here. Now, if I consider this intensity as I0, the intensity of unpolarized light as I0, if the intensity of this unpolarized light is I0, can you tell me what will be the intensity after polarization? This is unpolarized light, I0. So polarization के बाद, what will be the intensity? It is half of it, I0 by 2. Do remember that unpolarized light जब भी polarize हो गया ना, that intensity becomes half. हमने वो relation किया था, integration of cos square theta is half. ठीक है, average निकाला था. That formula we are applying. Next, this polarized light makes an angle of θ1. So, what is the intensity after passing to the second film? I will write it as I2. So, what is I2 going to become? I1 cos square θ1. This is which law we are applying? हमने उसी पेज पे सबसे ऊपर चेक करो, Mallows law. So what is I2? Now Mallows law यहाँ पे apply नहीं होता है. यहाँ पे क्या है? This is unpolarized light getting polarized. So intensity सीधा half हो जाएगा. But Mallows law is applied when the polarized light passes through the thin film, making an angle of θ1. Now ये ray of light यहाँ से इधर pass हो गया. Next, now again it makes an angle of θ2. So what is the intensity after it passes through the third film? That is I3. So what is I3 going to become? ये I2 था. It will become I2 cos square θ2. Okay. तो मेरा question I3 find out करने का है. What is the intensity? Okay. That is I2 cos square θ2. But I2 itself क्या है? I1 cos square θ1 cos square θ2. I2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो I2 के बदले क्या आ गया? I1 cos square θ1 cos square θ2. But I1 खुद क्या है? What is I1? I0 by 2 cos square θ1 into cos square θ2. This is a solid example. Let's go through it. कुछ questions है तो पूछो. I suppose कल शमिता ने ये question पूछा था. What happens if there are three? This is a reflecting surface like glass, water. Now, whenever a ray of light is incident on it, we know that, sorry, this is not a reflecting surface. This is a transparent surface. Sorry for that. This is a transparent surface like water or glass. Water or glass. Okay. Whenever a ray of light is incident on it, whenever this ray of light is incident, what is going to happen? There will be a refraction that will take place. So this is the angle of incidence. This is the angle of refraction. That we already know. Okay. So whenever a ray of light is incident, there is a refraction taking place. Like water, glass, ऐसा सब transparent surface में refraction होता है. That everyone knows. Okay. But there is an interesting thing that whenever this ray of light is incident, other than refraction, there is also a small amount of reflection that takes place. There is a small amount of reflection that takes place. Okay, so the ray of light which is incident, it not only gets refracted, but there is also some part of reflection. That you must have also seen that तुम अगर पानी के तालाब के यहाँ पे खड़े रहोगे तो you not only see the things which are there inside water यानी refraction, but you also see the things that are on the opposite side, that is reflection.
ओके तो तुमको रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. So when the ray of light is incident, there is not only refraction, there is also reflection taking place. Okay. Now the interesting part is if this is unpolarized light, this is unpolarized light, the ray of light which is refracted is also unpolarized. The ray of light which is refracted is also unpolarized. But the ray of light which is reflected is partially polarized. This is partially polarized. Notice करो मैंने partially दिखाने के लिए मैंने arrow का distance छोटा बनाया. So whenever the ray of light is incident on the surface of this transparent medium, there is a refraction. वो refraction is also unpolarized light. But जो reflection होता है ना, that is partially polarized. ठीक है? Now why it is only partially polarized? Actual में अगर तुम ये वाला unpolarized light यहाँ पे लोगे ना, तो there is only some part of angle that is made. मतलब अगर ये मेरा reflected ray है और ये मेरा unpolarized light है, ठीक है? Notice करो there is a small angle over here. तो इसके components form होते हैं. There is one component इसके साथ, another component इसके साथ. तो जो component इस ray of reflected ray of light के साथ आ रहा है ना, वो longitudinal wave create कर रहा है because इसका vibration on this reflected ray is like this. It's a longitudinal wave. तो longitudinal wave वैसे भी कोई effect create नहीं करता है. But ये जो है this ray of light, this unpolarized light, और ये जो दूसरा component है, वो इस point पे only some part of it is effective. इसके लिए this becomes partially polarized. Partially polarized मतलब there will be polarization, but वहां पे unpolarized light का length कम हो जाएगा. Okay, intensity कम हो जाएगा. It is called partially polarized. Okay. Now, at a certain angle of incidence, this is called as Brewster's angle. This is a Brewster's angle. The refracted ray, this is the angle of refraction. The refracted ray, this refracted ray and the reflected ray are perpendicular to each other. This special angle is called as a Brewster's angle. This is the angle of incidence. This is called as Brewster's angle. At this angle of incidence, the refracted ray and the reflected ray are perpendicular to each other. Okay, these both are perpendicular to each other. In that case, the reflected ray that we get is fully polarized. ये अभी भी क्या है? Unpolarized light. Incident light is also unpolarized. So you can notice it. This is the unpolarized light. If I incident it at a certain angle, what is this angle? This is a special angle. This angle is called as Brewster's angle. Okay, there theta b लिखा हुआ है. This angle of incidence. Okay, so because it is, this law is called as Brewster's law. At this angle of incidence, the refracted ray and the reflected ray are perpendicular to each other. When they are perpendicular to each other, this reflected ray is not partially polarized, it is fully polarized. So polarization achieve करने का दो मेथड है. पहला मेथड कौन सा है? तुम लोग फिल्म के थ्रू पास करो. Second method is when there is a refraction and reflection, then we get polarized light. So either you get partially polarized or completely polarized. Okay, तुम्हारे सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तुमको सीधा सीधा ये बता दिया है. ओके, तो तुमको यही याद रखने का, ब्रूस्टर्स लॉ ही याद रखने का है. सेकेंड पार्ट, now why this is completely polarized, ये रीजन भी टेक्स्ट बुक में नहीं है. So I'm just explaining this. Why this is completely polarized? मैंने यहाँ पर कुछ रीजन एक्सप्लेन किया था, याद रख सकते हो, समझ में आएगा अच्छी बात, नहीं समझेगा छोड़ दो.
क्या रीजन था, वही रीजन यहां पे अप्लाई होता है. ओके, नाउ this is reflected ray, this is refracted ray. They are making an angle of 90. ये जो रिफ्रैक्टेड रे है या अनपोलराइज लाइट है. तुम ये अनपोलराइज लाइट इधर भी चेक करो, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये अनपोलराइज लाइट इधर पूरा का पूरा 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है. सो दिस इज अनपोलराइज लाइट. तो यहाँ पर एक डॉट है और एक लाइन है. ओके, ये जो लाइन है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ कौन सा वाला वेव क्रिएट कर रहा है, अभी मैंने इधर बताया था. प्लीज अनम्यूट एंड आंसर. ये जो अनपोलराइज लाइट है, दिस पार्ट ऑफ द अनपोलराइज लाइट, दिस इंटेंसिटी, ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ कौन सा वाला एंगल क्रिएट कर रहा है, कौन सा वाला वेव क्रिएट कर रहा है, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडिनल वेव? Longitudinal. Very nice. That's the reason this intensity is neglected. तो सिर्फ एक ही इंटेंसिटी बचता है, ये वाला. ये जो डॉट डॉट मार्क का मतलब है इसकी इंटेंसिटी ऐसी जा रही है. दिस इज द इंटेंसिटी. ओके, तो सिर्फ ये इंटेंसिटी बचता है, तो यही इंटेंसिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. Are you clear with this? ठीक है, because the angle is 90. यहाँ पर क्या था, the reflected ray and the refracted ray wasn't making angle 90. इसके लिए इसका दो कंपोनेंट्स फॉर्म हो गया. एक जो along this reflected ray गया, जो कुछ वो जो निग्लेक्ट हो गया longitudinal waves के कारण, और दूसरा इफेक्ट के कारण पार्शियली पोलराइज हो गया. बट यहाँ पर because of the angle 90, the reflected ray is completely polarized. Is that part clear to you? ओके, अगर ये नहीं समझा चलेगा, तुमको सिर्फ ये याद रखने का. नाउ this is angle of incidence, theta b, Brewster's angle. This is angle of reflection, refraction, theta r. Now, as per the law of reflection, angle of incidence is also the angle of reflection. ये theta b है, तो ये भी theta b ही रहेगा. As per the law of reflection, ये theta r है, that is refraction का angle. Now you notice it, this is linear pair. In this linear pair, theta b plus 90 plus theta r is equal to 180 degree. Theta b plus 90 plus theta r is 180. Yani what does theta b plus theta r becomes 180 minus 90 यानी 90. यहां तक क्लियर हो गया. Now what is refractive index? N2 upon N1. N2 is the refractive index of this medium, N1 is the refractive index of this medium. What is N2 upon N1 equal to, as per Snell's law? Sin I upon sin R. Correct? अभी मैं Snell's law इसके लिए यूज कर रहा हूँ. इधर Snell's law अप्लाई नहीं होता है. ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड में Snell's law अप्लाई होता है. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है. तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई किया. नाउ आई एम अप्लाइंग Snell's law. सो व्हाट इज N2 upon N1? sin I upon sin R. That is N2 upon N1 is sin I. Sin I. What is this I angle? Theta B. Sin R. What is this R angle? R angle क्या है? R angle यानी तुम्हारा theta R angle है. Now N2 upon N1 is sin theta B upon sin. But what is theta R? ये theta R क्या है? 90 minus theta B. What is sin of 90 minus theta? Cos theta. Cos theta. What is sin upon cos? Tan theta. So what is the relation N2 upon N1? अपने को N2 upon N1 क्या आ गया? Tan theta B. या फिर what is this Brewster's angle equal to? ये tan इधर आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? Tan inverse of N2 upon N1. So once again, this is simple derivation. This is simple derivation once again. This is Brewster's law. As per Brewster's law, the reflected ray and the refracted ray, when the reflected ray and refracted ray makes an angle of 90 degree,
ठीक है. Then the reflected ray is completely polarized. That is Brewster's law. This angle is called as, this is a special angle. Okay. This angle of incidence is called theta b, Brewster's angle. As per laws of reflection, ये theta b है तो ये भी theta b है, ये theta r. अगर मैंने इधर लीनियर पेयर यूज किया तो this plus this is 180, यानी theta b plus theta r will become 90. पहला पार्ट क्लियर. स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, n2 upon n1 is sin i upon sin r. बट I यानी थीटा b, r यानी थीटा r. थीटा r के बदले 90 माइनस थीटा b किया, थीटा r के बदले 90 माइनस थीटा b किया. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन अपॉन cos इज tan, tan इधर लेके आ गए tan इनवर्स. ओके, नाउ देयर इज अ सम रिलेटेड विद दिस. पेज नंबर 167 is polarization by reflection, Brewster's law. Please come to this page number 167. You can see that तुमको सिर्फ इतना ही पार्ट एक्सप्लेन किया इधर, इसके अलावा जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो इधर नहीं लिखा हुआ है, वो तुमको नहीं है. ठीक है, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ पेज 168, कम टू द न्यूमेरिकल. Okay, question is, for what angle of incidence will light incident on a bucket filled with liquid having refractive index 1.5 be completely polarized after reflection? Now understand this question. For what angle of incidence? For what angle of incidence on a bucket filled with liquid having refractive index? This bucket is filled with liquid having refractive index 1.5 be completely polarized. Reflected ray should be completely polarized. यानी Brewster's law apply होगा, यानी कि ये formula apply होगा. ठीक है, so n2 1.5 है, n1 दिया नहीं है तो n1 नहीं दिया है ना, तो उसको 1 कंसीडर करना. It's like absolute refractive index. Okay, so n2 is 1.5, n1 is 1. So what is n2 upon n1? Tan of theta b. तुमको ये theta b फाइंड आउट करना, अभी जो ब्रूस्टर्स लॉ प्रूव किया. Okay, n2 is 1.5 upon 1 is tan of theta b. So what is theta b equal to? ये tan इधर आएगा, यानी क्या बनेगा? Tan inverse of 1.5. Okay, use your log table, find the answer. वैसे यहाँ पे आंसर डायरेक्टली देके रखा है. Okay, any questions till here? No. No. Polarization by scattering. Now what is scattering, by the way? Okay, when the ray of light falls on small particles, that ray of light gets scattered in all directions. That is called as scattering. Okay, now page number 168, polarization by scattering. When sunlight strikes air molecules or dust particles in the atmosphere, it changes its direction. When the sunlight falls on dust particles or air molecules, it changes its direction. This is called as scattering. We see the sky as blue because of this scattering. So the scattering is the reason that we see the sky as blue in color. If there was no scattering, now this is quite interesting to understand. If there was no scattering, agar scattering of light nahi hota, then sky would have appeared to be black. Why? Because udhar koi light nahi jata tha. Okay? So there is no light going or coming from there. तो तुमको सन जैसे ये बल्ब है ना, ये जो बल्ब था कल जो दिखाया था, वो बल्ब लाइट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे तुमको सिर्फ सन लाइट प्रोड्यूस करते हुए दिखता था. पर उसके बाजू का एरिया जो अभी ब्लू दिखता है हमको, स्काई जो ब्लू दिखाई देता है, वो स्काई ब्लू नहीं दिखाई देता, वो ब्लैक दिखाई देता था. ओके, जहां से लाइट आ रहा है सिर्फ उधर ही का ही लाइट दिखता, सन का लाइट दिखता. ठीक है, सो if there was no scattering, the sky would appear dark to us as long as we do not directly look at the sun, and we could see stars even during day. दिन में तारे दिखते हैं, मतलब. When sunlight is scattered, it gets partially polarized. Now this is interesting. When this sunlight gets scattered, किससे scatter हो रहा है? By air molecules or by dust से. When this sunlight gets scattered, this gets polarized. Okay, partially polarized. Partial word का मतलब बता दिया.
in a way similar to the reflected light seen above, like this one. The degree of polarization depends on the angle of scattering, the angle between the direction of light incident on the molecule or dust particle and the direction of the scattered light. If this angle is 90 degree, the scattered light is plane polarized. Thus, the scattered light reaching us from different directions in the sky is polarized to different degrees. Okay, this scattered light is polarized in different. So the blue light that we appears, it is actually the partially polarized light that we get. Okay, now now this is one wave. Now along this one wave, if there is another wave, okay, and both these waves interfere with each other, what we call is the superposition of waves. This is called as superposition of waves. When two waves interfere with each other, these two waves have the same amplitude, has the same phase. Means ये जितना time period लेगा उतना ही time period ये लेने वाला है. They are in same phase. यानी both दोनों के बीच में there is no phase difference. Phase difference का मतलब मैं यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ. This is called as phase difference. चेक करो, ये किधर से स्टार्ट हो गया, ये उसके थोड़ा लेट स्टार्ट होएगा या पहले स्टार्ट होएगा. This is called as phase difference. Okay, so there is zero phase difference. So if there is no phase difference and both these waves meet each other, the resultant wave which is created, the resultant wave which will be created, okay, will have that displacement. The resultant wave will have its displacement as a vector sum of both these waves. This is called as superposition of waves. Okay, so whenever two waves having the same amplitude, different amplitude, पर अगर हम लोग अभी superposition study करने के लिए same amplitude ही ले रहे हैं. When two waves of same amplitude, okay, same frequency, यानी time period same है. Frequency is the reciprocal of time period. इसको जितना टाइम लगता है एक वेव को, सेम टाइम पीरियड इसको मिल रहा है. दे आर मीटिंग ईच अदर इन द सेम फेज. अगर ये सेम फेज में मिल रहे, द रिजल्टेंट वेव व्हिच इज क्रिएटेड, रिजल्टेंट वेव विल हैव द डिस्प्लेसमेंट एज द वेक्टर सम ऑफ बोथ दिस डिस्प्लेसमेंट. दैट इज, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है. जो मेरा रिजल्टेंट वेव क्रिएट होएगा ना, वो ऐसे क्रिएट. उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? एनीवन? 2A. वेव का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा when these two waves meet? 2A. 2A. Very good, very nice. That is 2A. Why that is 2A? Because दोनों सेम फेज में मिला है ना. So resultant amplitude is 2A. But to notice करो, the frequency is same. Frequency is same. Frequency या फिर time period same होता है, because frequency is the reciprocal of time period. Frequency is same over here. ठीक है, यानी इसको जितना टाइम पीरियड है उतना ही टाइम पीरियड इसको. Now in the same part, अच्छा, this wave which is created is, this is called as constructive interference. Constructive, the word used is constructive interference. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब जहां पे क्रेस्ट को मीट हुआ एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया. ट्रफ को मीट हुआ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया. क्रेस्ट को मीट हुआ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया. सेम में ट्रफ को मीट हुआ, एम्पलीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ in the same part, this is one wave.
second wave. Now what do you notice? They are meeting each other at a phase difference नोटिस करो, इसका जो मैक्सिमम क्रेस्ट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसके क्रेस्ट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फेज. ये डिफरेंस ऑफ फेज है. ओके, सो आइदर दिस lags behind this wave, lags behind this wave, okay, or this wave lags behind this. The word used is either lag or lead. By how much will it lag or lead? Let's see. देखो, यहां से यहां तक, इधर से इधर तक, this is how much, इधर से इधर तक is 2 pi. This is 2 pi. See, one wave is similar to a circle. One wave is similar to a circle. ये circle को ही represent. This wave को जो time लगता है, time period is similar to the time period considered to rotate around the whole circle. तो a wave is considered like a circle. तो circle का total angle कितना होता है? 2 pi. तो यहां से यहां तक total phase, मैं phase की बात कर रहा हूं, वेव का लेंथ की बात नहीं कर, मैं इस लेंथ की बात करूंगा ना, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज वेव लेंथ. मैं फेज की बात कर रहा हूं. तो यहां से यहां तक का फेज इज 2 पाई. तो इधर से इधर तक का विल बिकम पाई. नाउ इफ यू नोटिस इट, बोथ दीज आर मीटिंग ईच अदर एट अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. पाई का फेज डिफरेंस. या फिर अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो ये लैम्बडा है, ये भी लैम्बडा है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, but they are meeting each other at a phase difference, path difference of lambda by 2. अगर दोनों वेव path difference of lambda by 2 पे meet हो रहा है, how is this meeting taking place? How is this interference taking place? Notice करो, the crest, is it meeting a crest over here? ये crest इसके crest को meet हो रहा है क्या? Tell me fast. No, crest किसको मीट हो रहा है? crest किसको मीट हो रहा है? Trough. ये crest trough को मीट हो रहा है, एंड ये trough इसके crest को मीट हो रहा है. They are meeting each other in opposite phase. Last time they were meeting each other in the same phase. This time they are meeting each other in the opposite phase. तो इसका amplitude इसके amplitude को क्या करेगा? The resultant, what is superposition of waves? When two waves meet each other, the resultant wave will have a displacement as the vector sum of both the displacement. Now tell me, इसका displacement इसके displacement को क्या करेगा? क्या form होएगा? Will they get add up? Cancel. क्या करेगा? जरा थोड़ा loud रहना. What they will do? Cancel each They other. will cancel each other. Very nice. So this A is going to cancel this A. यानी जो रिजल्टेंट वेव क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पे वो कैंसिल हो गया. वैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट इसके डिस्प्लेसमेंट को कैंसिल करता है, इधर का डिस्प्लेसमेंट इसको कैंसिल करता है. तो ये सारे पॉइंट, ये ट्रफ इस क्रेस्ट को कैंसिल करता है, ये सारे पॉइंट जीरो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हेन दीस टू वेव्स मीट ईच अदर इन अपोजिट फेज, ये क्रेस्ट ट्रफ को मीट कर रहा है. When they meet each other in opposite phase, the resultant displacement created is zero. This type of a wave is called as a destructive wave. This is called as a destructive wave. Okay. Any questions till here? ये सिर्फ तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग है. Okay. ये डायग्राम क्या सिग्निफाई करता है? This ray of light has passed through the slit source. तो यहाँ पे सिंगल सोर्स है. Then there are two different source created. These are the two different source created from the same source. So from the same source, there is two different source created over here. Now these are two different sources created from the same source. So now this source will act like a cylindrical wavefront, and because it is a wavefront, यहाँ पे waves create हो रहा है. Okay. Now ये waves कैसे create हो रहा है? तुमको ये डायग्राम अगर नहीं समझा तो ये वेव्स कैसे क्रिएट, अगर ये स्लिट सोर्स है तो इसका जो वेव क्रिएट होएगा ना वो ऐसा है. तो मैंने सिलिंड्रिकल से वेव फ्रंट लिया, दिस इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट.
इस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को मैं ऐसे रख रहा हूं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, या फिर अगर मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है, so now each point over here will be forming a wave over here. So this is, each point forms wave. So this type of waves will be formed. Okay, यानी एक क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, ट्रफ फॉर्म हो रहा है, क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, ट्रफ फॉर्म हो रहा है, क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, ट्रफ फॉर्म. So there is crest, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ. जो डार्क वाला है वो क्रेस्ट है, डॉटेड वाला इज ट्रफ. Because of this crest and trough formed by both these waves, both this crest and trough are going to interfere with each other. Now when they interfere with each other, there will be superposition of waves, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले learn किया था. Superposition of waves form होएगा. Okay, that means the resultant displacement है या तो वो constructive interference होगा या तो destructive interference होगा. Okay, so let's see how does that take place. Okay, constructive होता है कि destructive होता है. Look at this, huh? If you notice it, यहाँ पे dark meets the crest, trough meets the trough, crest meets the crest. ठीक है? So this way, if you join it, इसको join करेंगे ना, this is constructive interference. Now let's see over here. This is, if you notice here, this is crest meets the trough. Crest meets the trough. Okay. So same way, if I join this is destructive interference. वापस यहाँ पे notice करो, crest meets the crest, trough meets the trough, trough meets the trough, crest meets the crest. इसको join करेंगे, this is constructive. तो ये constructive interference, this is constructive interference, destructive interference, constructive interference, destructive interference. तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, अभी मैं destructive को डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ. वैसे टेक्स्ट बुक में ज्यादा अच्छी तरह से दिखाया. टेक्स्ट बुक में नोटिस करना, जो ब्लू लाइन है ना, that is constructive interference, and जो रेड लाइन है that is destructive interference. Okay, तो जो डॉटेड है वो मेरा destructive है, जो डार्क है वो constructive है. So if you join it like this, जो डॉटेड है that is destructive, जो डार्क है that is constructive interference. So we'll get interference pattern. अपने को इस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होएगा. ओके, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे दिखेगा, पेज 169 पे डायग्राम चेक करो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का. उसमें साइड में इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है. अच्छा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए मेरे को इधर स्क्रीन रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीन रखना पड़ेगा. स्क्रीन यानी क्या होता है, दिस व्हाइट बोर्ड इटसेल्फ इज अ स्क्रीन. तो मैंने अगर इधर व्हाइट बोर्ड रखा ना, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेरे को इस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा. ठीक है, इन दैट इंटरफेरेंस पैटर्न देयर विल बी डार्क पैच, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट. नाउ दैट ब्राइट signifies constructive interference. This bright signifies constructive interference. This dark signifies destructive interference. Why this dark signifies destructive interference? ये डार्क पैच के यहाँ पे हुआ क्या? Can anyone tell me superposition of waves में हुआ क्या? ये ब्राइट के यहाँ पे क्या हुआ था? ब्राइट के यहाँ पे क्या हुआ था? Crest meets the crest. तो जो resultant displacement है वो maximum हो गया था. So this is a bright point. Dark point पे क्या हुआ था? इधर a crest meet the trough. इस वाले का crest उस वाले के trough से meet हुआ. So a crest meets the trough. So the resultant displacement becomes zero, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, zero. So the ray of light produced over here is a dark band. So there is bright band, dark band, dark band, bright band, dark band, bright band. So this type of spectrum is produced. This is a spectrum produced. Okay, this is what we are learning in the next topic, that is interference of light. Any questions over here? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन, हम लोग इसको अभी तक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया है, तो कल हम लोग यही टॉपिक से स्टार्ट करके आगे लेके जाने वाले. ठीक है, बिकॉज मेरे को ये सोर्स को भी एक्सप्लेन करने का. यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पहले पूछो.